Hello. This is Vshetty saying hi to Vshetty because this is supposed to be a private video, isn't it? An expression for my own self. So here goes. Well, this is my friend Riz, friend, mentor, coach, दोस्त भाई रिज ने बताया कि भाई you had this fantastic experience. I was sharing today's experience with him, me being the chief guest. Yes. I'm not gonna forget this theme in a bit. There are lots of learnings, lots of interesting stuff. तो ऐसा था भाई. So I was sharing this with him and he said, भाई, you want to be an author, right? A lot of times author is all about writing your own story. So, and it's important that you recollect the story as 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 soon as it happens, as fresh as it is in your memory, क्योंकि उसका जो energy and enthusiasm तभी है. After 3 days it becomes kind of stale. तो मैंने बोला ठीक है भाई, तुमने बोल दिया तो कर लेंगे. तो एक वीडियो तो मैंने बना दिया, राइट, अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ क्या बोलते हैं, बीइंग द चीफ गेस्ट, अ लिटिल बिट, बट आई एम गोइंग टू स्पीक अ लॉट मोर. बट द इंटरेस्टिंग स्टोरी इज अबाउट हाउ इट केम अबाउट. So about a couple of weeks ago, Miss Vishaka she's the HR manager at Nexstar. So I was coming back from lunch and she said, Vishwajit, आपके लिए एक फ़ोन आया था, Prashant Shetty from AJ Institutes. Now, immediately I did a 1 plus 1 is equal to 10. Because a couple of years ago I had visited AJ Hospital. And AJ Shetty is one of the wealthiest people in Mangalore. And he has this hospital, AJ Hospital, and a whole chain of institutions. So I had met with his son-in-law and daughter who were managing the hospital. And I had met the secretary of his son who's managing all the institutions. So as soon as this girl said, Mr. Prashant Shetty from AJ Institutions, I said, भाई ये बड़े आदमी को मेरे को कॉल क्यों आया? And immediately I said, obviously he's looking to speak to Suhas Talwar, because that's how we had introduced ourselves. तो मैंने बोला सही है भाई. And I immediately called the number that was given to me, half expecting not for it not to be picked up. बड़े आदमी है भाई, अपना कौन पिकअप करेगा? तो ऐसा था, ये मेरा बिलीफ सिस्टम था. तो ऐसे ही हुआ. उन्होंने नहीं फ़ोन पिकअप किया. And I said, okay man, what do I do? I reached out to his secretary. And I said, भाई, आपका boss called me, Are you looking for some corporate training or some training for your students? तो उसने बोला, ऐसा nothing that I know of, but I'll check with my boss. ठीक है. In the meantime, I get a text message. Mr. Prashant Shetty reaches out to me and he says, I'm sorry, yes, it was me who wanted to speak with you, and I'm sorry, I'm at lunch. I'll call you in 20 minutes. तो बोला सही है भाई, बड़े आदमी है मगर हाईली रिस्पॉन्सिव है. सो 20 मिनट्स के लिए मैंने वेट किया. 20 मिनट्स हो गया 50 मिनट्स. मैं बोला बड़े आदमी है, लंच से आ रहे अपने मे बैक में बैठ किए. अरे भाई सही है, भूल गए होंगे. ऐसे चलो भाई, 20 हो गया 50 हो गया 60, तो अभी फ़ोन कर ही डाल देता हूँ. तो मैंने फ़ोन किया. And I was effusive. I was very grateful for him to have
thought of me, and I introduced him myself, and I said, we do corporate training, we do that and this, and we had met with your brother-in-law who's the head of AJ hospitals, and we met with your sister who's heading the admin at AJ hospital, and we met with blah blah and blah blah. I'm so grateful, blah blah, what can we do for you, blah blah blah. उससे पहले मैंने पूरा सुहास को फ़ोन किया था, और मैंने पूरा उसका दिमाग चाटा, हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ, मिस्टर प्रशांत शेट्टी, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन मैंगलोर इज गोना कॉल मी, तो मैं कैसे, मैं हाउ कैन वी विन बिजनेस फ्रॉम हिम, यू नो, फॉर सुहास. तो ऐसा मेरा सोच था. तो एनीवे सारा प्रेप किया मैंने, ये वो इंटरनेट से थोड़ा रिसर्च किया, what are the institutions that he has, what could he possibly need, what could I propose, सारा दिमाग, एनालिसिस पैरालिसिस मेरा जो पेशा है. तो मैंने ये किया, and then I made this phone call, and the gentleman said, yes, okay, and I told my whole story. I know your brother, I know your sister, I know this and blah blah. Ultimately he said, he didn't say he's not that Prashant Shetty, but he just said, I am Prashant Shetty, I am the faculty, I am the placement officer at AJ Institute of Management. तो मैं बोला, अरे द तेरी की. No offense, Prashant, but it was not who I thought he was. तो मैं बोला, okay Prashant, तो अभी do you want to speak to Suhas or you want to speak to me? So Prashant says, I want to speak to you, I want to invite you to be a chief guest. So मैं बोला, ये क्या चल रहा है भाई, how crazy is this? कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है बड़े तरीके से. मैं कौन हूँ, मेरा औकात क्या है भाई. Then I said, fine, fair enough, I'll think about it, blah blah, you know. And eventually एक हफ्ता गया, I was doing something else, I can't remember what, एकदम busy हम थे. I said, maybe he's forgotten all about me, you know. क्या है भाई, he must have just you know, अंधेरे पे निशाना मारा होगा. So that was my thought process. But no, I get an email from the director of the institution. So I'm like, yeah, these guys are serious. And then there was something shifting in me. I said, the Lord is giving me all kinds of, you know, abundance of all varieties. He's trying to encourage me. तो मैं क्यों अपने आप को नीचे करूँ भाई, जबरदस्ती नीचे क्यों करूँ. You know, if it's coming, if they think that I'm capable of being a chief guest, then why not? So मैंने बोला, चलो भाई, let's embrace this. तो एक और email आया, you know, the invite letter with my name on it and the chief guest. So it started becoming, you know, unreal, started becoming real. And I'm like, क्या चल रहा है भाई? And I chose to embrace it. I started saying कि चलो भाई, मैंने उनको ईमेल लिखा, भाई what is it that you want to do, जैसे एक रिबन कट करो और फिर कल्टी मारो 2-3 मिनट का नमस्ते बोल के, yeah, what do you want, what is this workshop all about? So they wrote back to me and they said, this is part of your inaugural thing, और ये 20 से 25 मिनट का तुमको inaugural talk देना है. I'm like, what? Oh God. When I spoke about this to my friends, they were like, भाई तुम तो इतना बकते हो, तो 20 क्या 20 मिनट क्या भाई, तुमको तो रोकना पड़ेगा. But I was terrified. मैं कैसे बात करूँ भाई ऐसे. बट मैं बोला, चलो भाई ये अपॉर्चुनिटी है इसका, मुझे I have to maximize this. So I started thinking about it every day, started making these short videos. In fact, it was supposed to be long, but ये short ही रह गया भाई.
25 मिनट का चक्कर था, 2-3 मिनट में ख़त्म वीडियो. सो आई वाज लाइक कैसे मैं बनाऊंगा कंटेंट, कैसे मैं बनाऊंगा. इवेंचुअली वन डे बिफोर द इवेंट, मंडे को था आज, और सैटरडे को तो मैंने सुहास तलवार से मैंने फ़ोन किया, एंड फॉर्चुनेटली ही पिक्ड अप द कॉल एंड ही सेड वी हैड नाइस कन्वर्सेशन. आई शेयर्ड सम ऑफ माय आइडियाज़ कि ऐसे ऐसे करना. ही सेड दिस इज़ ग्रेट. हाँ, एंड ही गेव हिज इनपुट्स, स्पेसिफिक इनपुट्स. अच्छा, सभी बच्चों के साथ ये करा दे, ये वो वर्कशॉप के जैसा. एंड एंड देन आई सेड फाइन, फैंटास्टिक. मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया. I wrote it, then I said I prepared certain things, and as I started doing it, confidence started building up. सुहास ने क्या बोला, अभी तुमको क्लैरिटी आएगा, उसके साथ बिलीफ आएगा, और जब तुम डिलीवर करने जिस दिन आओगे, सो यू विल बी इन दैट फोकस, यू विल बी इन दैट जोन. तो मैं बोला सही है भाई, मे बी दिस इज द होल एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट दिस 180 फर्स्ट ईयर MBA स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मी. तो मैं बोला चलो कर लेते हैं, सुहास ने बोला तो कर लेंगे. सो कंटेंट वाइज आई हैड सम आइडियाज़ फ्रॉम द 3-day बिजनेस एक्सेलरेशन कोर्स. तो उससे थोड़ा मैंने ये लिया. सुहास ने जो बोला उसको मैंने देखा. सुहास टोल्ड मी अ फ्यू weeks ago, he said it's all about your own personal story, just like I'm creating this video right now. तो तेरा पर्सनल स्टोरी इंटरेस्टिंग है भाई सब लोगों के लिए, तो उसके बारे में बात कर. तो अपना पर्सनल स्टोरी, अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, अ लिटिल बिट ऑफ शॉक एंड ऑ, 3 things that सुहास said, क्लैरिटी पे बात कर, बिलीफ पे बात कर, फोकस के पे बात कर. These are the 3 things that he asked me to speak on. I elaborated on that, put my own story in there. I connected the workshop topic of self-awareness with the clarity and my story in it. So it was a beautiful way that it came about. I used self-deprecating humor. वो मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया, बाकी लोग को होपफुली मज़ा आया. और क्या किया मैंने, हाँ, वो बिजनेस एक्सेलरेशन कोर्स से फोकस को मैंने और स्प्लिट किया, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड ऐड किया. सो दिस इज़ व्हाट इट वाज. इट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द लर्निंग्स दैट आई हैव. इट्स कमिंग टुगेदर इन अ ब्यूटिफुल मिक्स दैट इज़ हु आई एम. सो ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है भाई. सो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्शन पैक्ड प्रोग्राम. तो मैं अभी वो स्टेज पर कूद रहा था पागलों के जैसे, एंड आई एक्चुअली सेड यू गाइज मस्ट थिंक आई मस्ट बी क्रेजी, आई हैव लॉस्ट इट. पीछे देख के मैं देख रहा था, प्रशांत शेट्टी वाज द पर्सन हू इनवाइटेड मी, एंड ही इज़ लाइक एट अ स्कॉल ऑन हिज फेस. ही बोल रहा है कि ये कौन पागल आदमी को मैंने बुलाया. एंड इवेंचुअली आई शोड दैट इट इज़ एन NLP टेक्निक. बहुत मज़ा आया उनको भी, और मुझे उससे ज़्यादा. स्टेज में कूद रहा हूँ. Eventually the director of the program, he said, the kind of energy that you displayed, the supreme level of self-confidence, that's the highest level of self-confidence. तो मज़ा आया सुन के. I was humbled by his praise, to be honest. I accepted graciously. मज़ा आया. True value was delivered, even if I have to say myself, I thought I was an instrument of grace. सही था. That was a prayer that I sat down with, and ऐसे ही हुआ. फिर क्या किया मैंने, हाँ, तो ये सब पूरा किया. फिर I took them to the exercise of circle of excellence, took them to the high energy. At least मेरा तो energy high हो गया. फिर मैंने trigger किया, मैंने words use किया, and I did all of that. I had an absolute blast. And I feel it's a first of many. Because it gave me clarity कि मैं इतना बकता हूँ, तो I'm a born speaker. As soon as I keep my inhibitions and I deserve, उसको सारा साइड में रख दो, बस बात करो, and just accept that this is who you are, and that's what my horoscope says. As per my guru and / my wife, she said, भाई तुमको बकने का ही काम करना है.
So that's why I'm gonna embrace it, man. I'm gonna embrace it. So ये चीज़ है. और क्या करना है मुझे? तो it was a blast, man. So, moral of the story, going back, I was expecting, I thought the call has come from the vice chairperson of the university, Prashant Shetty. उसके बाद आया तो निकला प्रशांत शेट्टी, the placement officer. I was expecting the call for Suhas Talwar, international corporate trainer. आया तो विश्वजीत शेट्टी के लिए, you know, humble भिकमंगू आदमी मेरे लिए आया, चीफ गेस्ट बन गया, you know. So something is changing. तो ऐसा हुआ. And as I did this whole program, it was, man, it was such a, मतलब, even if I had earned a few lakh of rupees for doing सुहास का प्रोग्राम, इसमें से क्या मज़ा आया. सुपर्ब यार. एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी, लाइक सुहास सर, अभी तो इसमें करियर बनाना पड़ेगा. मज़ा आया, मज़ा आया. आई रियली, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. इस पे माई मॉम ऑल्सो सेज, सन, वी रियली एन्जॉयड सीइंग यू इन द सूट एंड चीफ गेस्ट सब बन के. तुमको, I think you deserve it. And matlab, she didn't say you deserve it. She said, yes, it's our desire that you do this more often. ऐसा तुमको करना चाहिए बेटा. तो मुझे करना चाहिए. So, you know, I'm going to be able to scale myself, lift myself, that I can start operating at that level and start delivering value at that level. करेंगे? Vshetty करेंगे? Raise. Thank you for this advice. Chalo bhai, God bless you. Yo, 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 yo.